Mr. Ajay Suri, Mrs. Verma, Mr. Saha, Mr. Rajpal, the teachers of the school, and my dear students. It's a great pleasure to participate in Tathastu. It's a wonderful undertaking. I compliment you for it, and I wish you all the best for it. And I think the tryst with the national education policy is well timed, and I compliment the school for creating this tryst and for undertaking and committing to the implementation of the national education policy in the shortest possible time. As all of you have said, and especially Mr. Suri said, the national education policy has the potential, has the prospect of changing the entire education system of this country for good, qualitatively changing it for the better, and for creating children who are prepared for the 21st century and prepared to face the challenges which India will face as we go forward, not just for ourselves, but also for the global community. We must always remember the ambition, the vision that Swami Vivekananda had for our country, which is that this country has to be the Vishwaguru. We have to emerge from our colonial past as the leader of the world, as the Vishwaguru, and we can do it. We have the potential, because we know that so many of our countrymen who are thriving abroad and leading the biggest companies in the world and biggest organizations in the world, and that is something that we need to prepare ourselves for. And the national education policy, I am convinced, will be able to do that if we implement it in the spirit in which it is being designed and framed. And I know that the glorious tradition of the DAV, schools for more than a century, I think, are in that spirit, are in that light, and I'm sure, therefore, that all the DAV schools, wherever they are in the country, will contribute not only to the implementation of the national education policy, but also to the achievement of Swami Vivekananda's vision of India emerging as the world guru, as the Vishwaguru in the years to come. And I'm myself very impressed with the achievements and the progress and the multidisciplinary approach that this school has adopted. I was fortunate to see the video that had been sent to me in advance, and I'm really honestly saying that it was most impressive. That video showing us the approach that this school has adopted. So I wish you all the best for it, Ms. Rajpal, and I hope that you will carry on this wonderful progress that you are making already in the school. Friends, I don't want to make a long speech here, और मैं ये बिल्कुल बहुत ही संक्षिप्त तरीके से कहना चाहता हूँ कि आज का जो ये कार्यक्रम है वो अगले कुछ और दिन भी चलेगा, और मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ कि इस कार्यक्रम से न सिर्फ हमारे टीचर्स को और अध्यापकों को, बल्कि हमारे बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और उन्होंने जितना काम किया है, और जो छोटे से वीडियो मैंने अभी देखा, जितना क्रिएटिवली ये काम कर रहे हैं पपेट्स के साथ, और साइंस और पपेट्री और इन सब चीज़ों को जोड़कर, तो मल्टी डिसिप्लिनरिटी की जो इसमें एक अप्रोच है और जिसमें एक स्पिरिट है, वो बहुत आगे काम आएगी। तो मेरा आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। आज का जो कार्यक्रम है वो स्टेम के लिए मुझे बताया गया कि वो उस पर फोकस है, और मुझे खुद पता नहीं था, मगर मुझे अच्छा लगा कि एक यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल साइंस फाउंडेशन की रिपोर्ट है। Dr. Kumar, you are on mute now. Sorry, the cursor just came on its own, I'm afraid. So मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पढ़कर कि दुनिया के 25% इंजीनियर्स हमारे देश से निकलते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। मगर साथ में थोड़ा दुख भी हुआ। एक 2020-21 की रिपोर्ट है हमारी, ऑल इंडिया स्किल्स रिपोर्ट,
जिसमें ये कहा गया है कि आज के जो 47% इंजीनियर जो निकल रहे हैं वो अनएम्प्लॉयबल है, और ये बड़ी एक दुखद बात है। और इसको ये दिखाता है कि हमें कितना इम्प्रूवमेंट करना है, कितना हमें और इसको अपना आगे से स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना है। और स्टेम में इंजीनियरिंग जो है वो इम्पोर्टेंट इशू है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसकी नींव जो है वो आपके स्कूल में आप ही के जैसे स्कूलों में पढ़ती है। तो इसके लिए इसकी नींव को हमें और सुदृढ़ करना पड़ेगा, और मुझे यकीन है कि आप लोग इसमें जुटे हुए हैं और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मगर इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो और भी सूचांक के हिसाब से कुछ कम हो रहे हैं। जैसा कि अगर आप हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल की आप रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें आप देखेंगे कि जो 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 अचीवमेंट रेट्स हैं, अगर आप प्रथम की रिपोर्ट देखें, असर की रिपोर्ट देखें जो प्राइमरी स्कूल के लिए है, उन सब में ये निकल के आता है कि जैसे जैसे हमारे 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 स्कूलों में, हमारे स्कूल्स में जो है वो जैसे जैसे विद्यार्थी ऊंचे लेवल पे जाता है तो उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अचीवमेंट्स हैं, वो उस तरह के नहीं रहते जैसे कि और रहना चाहिए। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बात से हमें अवगत होना चाहिए। अवगत इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर नहीं होंगे तो हम जितना हमें जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा ध्येय है, जो लक्ष्य है, हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। और उसमें एक चीज़ जो अभी खास एक स्टडी निकली है, इथोपिया से आई है और फ्रांस से भी आई है और बाकी और मुल्कों में भी, जिसका कि पूरा एक तरह से यथार्थ है, एक तरह से उसका एक टेस्ट है, वो ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी, स्टेम की एजुकेशन और ख़ासतौर से मैथ्स की एजुकेशन अपनी मातृभाषा में ज़्यादा अच्छी होती है, और उसमें जो है वो समझ और उसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अपनी मातृभाषा में ज़्यादा अच्छी आती है। और इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज जो है वो फार्मूला बनाया गया है कि जिससे कि हमारी जो शुरुआत की पढ़ाई है, जो हमारा शुरुआत का जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हमारी मातृभाषा में हो सके, क्योंकि उससे जो है बच्चों की क्लैरिटी, बच्चों की पकड़, बच्चों की समझ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा ये आग्रह है कि हमें अंग्रेजी ज़रूर सीखनी चाहिए। वी मस्ट ऑल ऑफ कोर्स बी फ्लुएंट and adapt in English as far as possible, because that's the global language. But at the same time, to begin with, our foundations have to be laid in our mother tongue. And I say from my practical experience, because both my sons, they grew up until the age of 6 only speaking and learning and reading Hindi. So that happens to be our mother tongue, and for no other reason. So whatever be your mother tongue, I think the instructions, if they are in that language, we'll be better off. And I'm sure many people will agree to that. And I think this is time to, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम अभी अच्छे पाठ्यक्रम, किताबें, टेक्स्ट बुक्स और चीज़ें और मीडियम हमारी जो है वो अपनी मातृभाषा में, सारी मातृभाषाओं में मुहैया नहीं है, मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हमें एक ख़ास एफर्ट करना चाहिए, CBSE को एक एफर्ट करना चाहिए, एक सेल बनाना चाहिए, जैसा कि जापान में बना है, चीन में बना है, साउथ कोरिया में बना है, कि अपनी ज़ुबान में, अपनी मदर टंग में जो है वो दुनिया भर के जितने पाठ्यक्रम हैं उनको हम इकट्ठा करें, उनमें से अच्छी चीज़ें इकट्ठा करें, क्योंकि ये एक हमारा एक तरह से एक कर्तव्य हो जाता है। दूसरी बात बस मैं ये कहना चाहता हूँ, 2 बातें और कहना चाहता हूँ। दूसरी ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, जो कि उनकी मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, जिसका कि उन्होंने इतना उसमें एम्फेसाइज किया है, तो उसके लिए मेरे ख्याल में अब समय आ गया है कि हम स्टेम की डेफिनेशन को भी थोड़ा सा ब्रॉड कर सकें। स्टेम है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। हम क्यों ना इसको साइंस के साथ साथ इसमें हम सोशल स्टडीज़ भी जोड़ें, हम इसके साथ में टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है वो टीचिंग इंस्ट्रक्शन भी जोड़ें, या फिर हम थिएट्रिक्स जोड़ें। इंजीनियरिंग के साथ हम इसमें जो है वो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इंग्लिश, एजुकेशन जोड़ें, और एम के साथ हम मैथ्स और म्यूज़िक जोड़ें। आपको शायद, मेरे ख्याल में बहुत लोगों को पता होगा कि मैथ्स और म्यूज़िक में एक बहुत बड़ा अपना इंटरफेस है, इंटर रिलेशन है। और एक बहुत बड़ी किताब है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो कि जर्मन फिलोसफर्स ने लिखी है, कि जो मैथमेटिक्स के जो नोटेशंस हैं और जो ये जो हमारे हिंदी क्लासिकल और कर्नाटिकल क्लासिक म्यूजिक में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वो मैथमेटिकल है।
और उनका एक मैथमेटिकल कोएफिशिएंट होता है, और जो म्यूजिक अच्छी तरह से समझ जाता है उसको मैथमेटिक्स समझने में भी आसानी होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये स्टेम की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो मेरे ख्याल में काफ़ी नैरो हो गई है, और इसके लिए हमारी जो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए हमारे बच्चों का, आई एम अफ्रेड दैट्स नॉट बीइंग डन to the extent required. In fact, it's going the other way, and I'm quite actually dismayed to find that not in your school, but in large number of children are today going to these cramming schools, to these tuition schools in Kota and other places from the age of 14, 13 onwards, and they only learn how to pass exams and nothing else, and those exams are meant to be STEM exams because they are meant for the entrance for the IITs and so on. I think that needs to be changed completely as far as I'm concerned. So that's, I think, I hope that the DAV organization, because it runs so many schools, will pay some attention to this because कहना आसान है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, मगर उसको करने के लिए जिस तरह की क्रिएटिविटी और एक नया सोच, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए, उसको हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए आप जैसी ही संस्थाएं इसमें जो है वो आगे बढ़ेंगी तो बहुत बड़ा तो काफी काम होगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता था कि it is now the time, it's high time that we encourage our students to ask the question why in classrooms, at home, in every forum that they come about. हम जब बड़े हो रहे थे, when we were growing up, this question was banned. Our parents will tell us, ये क्यों बहुत पूछते हो, बंद करो इसको, just do what you are told to do. जैसा कहा जा रहा है वैसा करो, आंखों के इशारे पे बच्चों को चलने का आदत डालनी पड़ेगी. That has to change. Every teacher must now be prepared to answer the question why from any student and at every time, even if it takes a little longer to explain. This question why, ये क्यों होता है, ऐसा ये जो सवाल है, ये मेरे ख्याल में क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस इसका जो है वो इसके रूट पर है. और मेरे आप लोगों के पास तो अटल टिंकरिंग लैब है उसमें, और बहुत बहुत खुशी की बात है ये, आप उस लैब में ये सवाल एक कंपलसरी कर दीजिए कि ये क्यों होता है, कैसे होता है. अगर जब ये सवाल हम लोग पूछने लगेंगे तो मेरे ख्याल में हमारे बच्चे आज की दुनिया के लिए, एक नई बहुत तेजी से बदलती हुई दुनिया में, एक बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो है वो उसके लिए सक्षम हो पाएंगे. एंड फाइनली आई हैव टू से दैट it's also high time that we reverse the decline in our moral values. And I'm saying this very consciously. I'm saying this, please mark my words, reverse the decline in our moral values. I have noticed this in all ages of our life, in every aspect of our life, and this has to be reversed. And the beginning has to be made in the school. And the moral values, simple moral values, respect your elders, respect your teachers, the teachers to behave as gurus and as model builders and as ideals for the students. Respect the nature. Learn the meaning of the word Vasudhaiv Kutumbakam. What does that mean? How does that, what is it? Learn to respect the nature. Have empathy for those who are less fortunate. आप हमारे स्कूल में सब लोग बहुत भगवान की कृपा से बहुत संपन्न हैं, सब कुछ है आप लोगों का हुआ, अगर उनकी सोचे जो उन्होंने 2 साल में जिनके पास कंप्यूटर था ही नहीं, उनके पास मुहैया ही नहीं था, उनके पास मौजूद नहीं था. This empathy is what will carry us forward in this day. Tomorrow, mind my words, artificial intelligence and deep machine learning and robotics will replace a lot of us from our jobs. Who will care for them? Who will give them attention? We have to have this empathy for our less fortunate people and for all the rest of us. That have to be. And finally, but I think most importantly, we have to start the process. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो ओम के बारे में आपने बताया या गायत्री मंत्र शुरुआत हुई, but we have to put in practice the seeking for the spiritual, the seeking for the connection with the divine. I think this is something we start at a young age. This was our parampara, this was our tradition, this is what was taught in the Guru Shish parampara, in the Gurukuls of our country. And I think every school should begin to have. I remember I went to modern school, Barakhamba Road, when I was 150 years ago.
But we started our day by singing our bhajans, and those bhajans were the bhakti bhajans, the Sufi bhajans, and so on. I think time has come to restart that practice in every school. Once more, may I thank you very much for inviting me to this function. I wish you all the very best, and then finally, my apologies for being so short of time, but that's the call of my job, and I hope you will understand it. Thank you and namaskar.